हाय हेलो नमस्ते। मेरा नाम है दोईपन रॉय चौधरी और आज के इस लाइव सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एक सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सो राइट टू वर्क, ये तो कोई डीपीएस भी होगा। सो 36 नहीं है, मुझे 39 या 41 ये दोनों में से कोई एक लग रहा है। तो अभी इसको स्किप करते हैं, बाद में करेंगे। The ratio of the outer and the inner circumference of a circle is given. Okay. So circumference means this and this. Okay. Now this is 40 meter. What is the radius of the inner one? So अगर मैं inner one को r मान लूँ तो outer one हो जाएगा r plus 40. सो r के कोरस्पॉन्डिंग सर्कमफ्रेंस आएगा 2 पाई r, इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा 2 पाई r प्लस 40। और ये जो रेशियो है यही बोला गया है कितना है ना, ये है 15:17। ओके, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया। सो 17r इक्वल टू 15r प्लस 15 इंटू 40। सो 15 इंटू 40 में रख देता हूँ इसको, इधर आएगा तो 2r, 2 को इससे काटूंगा तो 20। तो 300 इज द इनर रेडियस। अब इनर रेडियस ही पूछा है तो 300। Okay, so next is what is the remainder when it is divided by 6. Okay, 139, अंत में 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है मतलब 6 से डिवाइड करने पर आई थिंक लास्ट 2 डिजिट मुझे चाहिए होगा। फिर कैसे करूँ इसको? hmm, चलिए इसको भी बाद में करता हूँ, अभी बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज इफ अ जॉगर jogs at 8 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 6। सो 8 की जगह पर ये अर्लियर अभी न्यू 8 की जगह पर 6 पे भाग रहा है। ही वुड हैव कवर्ड एक्चुअली अभी 6 पे भाग रहा है। मैं ऐसे मिटा देता हूँ यहाँ से। 6 पे भाग रहा है, अगर 8 पे भागेगा तो अभी जितना भाग रहा है उससे 20 ज़्यादा भागेगा। ये जो 2 का गैप है ना, तो ये 2 का ही बोल रहा है कि 20। तो एक्चुअल डिस्टेंस तो 60 कर रहा है अभी। ए बी सी इन्वेस्टेड इन दिस रेशियो आफ्टर 1 ईयर ईच। ओके, सो थोड़ा करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। द प्रॉफिट आफ्टर 3 years फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके ओके, सो यहाँ पर 10, 15 एंड 20। then after 1 year A and B invested 5 more and C withdrew 10। okay, after 3 years from the starting। so मतलब एक और बार ऐसे चलेगा। 20, 10, ये 40, तो 11 नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला है 60 और सॉरी 55। सो 3 वाला नहीं आएगा, 2 वाला नहीं आएगा, ये वाला आंसर होगा 40। तो इसको अगर मैं रेशियो करूँ तो 8, 11, 8। नेक्स्ट है यहाँ पर 2/5 होल टू द पावर 3 इंटू -3/4 टू द पावर 4
इंटू 5/3 टू द पावर 3, ओके, एंड टाइम्स 4/5 टू द पावर 2, ओके। आई थिंक पर क्यूब रह जाएगा, ये मैंने काट दिया इसको, ठीक है। अभी ये था 4 का स्क्वायर, इससे काट लूंगा तो स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर इसको काट दूंगा तो 3 रह जाएगा माइनस का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी नीचे ये कितना है ये, आई थिंक 4 स्क्वायर है, ओके। सो 2 क्यूब मतलब 8, 4 स्क्वायर मतलब 16, इधर 2 आ गया, 25, सो -3/50। ये माइनस क्यों रहेगा अभी मेरे, अगर एक सिंगल माइनस है पूरी इक्वेशन में तब तो मेरे ख्याल से माइनस रहना चाहिए ना, लेकिन अभी तो आ रहा है 0.06, माइनस कहीं से कटेगा क्या, दिख तो नहीं रहा कटता हुआ, तो कोई नहीं, इसको मार्क फॉर रिव्यू करके रखते हैं, बाद में देखेंगे। 4 liter of a solution having 10% acid was mixed with 5 liter of solution having 16% acid, ओके, ओके। सो एसिड है और बाकी तो वाटर रहेगा, चलो। पहले 4 में कितना एसिड है, 10%, यानी 0.4 एसिड है, और वाटर हो जाएगा 3.6, मिक्स विथ 5 liter ऑफ और सॉल्यूशन हैविंग 16% एसिड, सो 0.8 का एसिड रहेगा और 4.2 का वाटर रहेगा। 6 liter ऑफ प्योर एसिड वॉज देन एडेड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, और इसके ऊपर से और 6 मतलब 7.2 हो गया टोटल इधर, प्लस 6, सो ये 10, 15। एसिड का कंसेंट्रेशन कितना है, 50 से थोड़ा कम, क्योंकि 50 आता तो 7.5 हो जाता, तो 50 से कम एक ही ऑप्शन है, 48। और ऐसे अगर मतलब कैलकुलेशन करने चाहे तो हम कर सकते हैं कि इसको अगर 50 टाइम्स होता तो 7.5, लेकिन 0.3 कम है तो 0.3 इसका कितना गुना है, 2, सो 22% कम होगा। नेक्स्ट, a trader marks his good in such a way that after allowing 16% discount on the mark price he gains 26%। तो 100 से 126 जा रहा है, लेकिन 126 का वैल्यू कितना है अभी, 84। ये आ रहा है मेरे ख्याल से 42 से जाएगा ना, 2 और 3, सो अगर फिर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी, अगर ये, एक सेकेंड, अभी मुझे इधर 100 का निकालना है ना इसका, तो अगर 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 ये 2 का डिस्काउंट के बाद ये प्राइस आया ना, तो 5 का वैल्यू चाहिए मुझे इधर, इट इज द मार्क प्राइस। मैं कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये कितना है, ये है 126, सो 126 से 84 का वैल्यू, तो ये पर पूछा गया है कि 100 का वैल्यू कितना होगा। ये 2 से 3 हो रहा है, अगर ये 2 है तो ये 3 कितना होगा, 150। तो अभी कह रहा है कि ये जो है एक्स का वैल्यू है 318 रुपीज़,
तो 150 का इसका 1.5 गुना 318 तो होगा ही होगा, उसके ऊपर से 150 और 9 159 ऐड होगा, सो 998 होता, लेकिन एक कम है तो 7 और एक 67477। An electric pump can fill a tank in 5 hours due to a leakage। अभी कितने देर में कर रहा है? 7.5 घंटे में। ये कितना है? ये टाइम है। तो टाइम का रेशियो मुझे अगर निकालना पड़े तो 15-10, तो 10-15 यानी कि 2-3, 2-3 एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3-2। हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ वाटर गोज वाटर डज नॉट get in or out of the tank any point during this period। ओके ओके, तो ये एक के एफिशिएंसी के साथ कितने देर में खाली करेगा? 3 के एफिशिएंसी के साथ 5 घंटे में कर रहा था, तो एक के साथ 15 घंटे में खाली कर देगा। नेक्स्ट पूछा है कि अ बुलेट ट्रेन कैन ट्रेवल 25% फास्टर देन एन एक्सप्रेस ट्रेन। 25% मतलब 1/4, यानी कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन 4 स्पीड है तो बुलेट ट्रेन का स्पीड 5 है। ये एक्सप्रेस का, ये बुलेट का। तो ये कह रहा है कि दे स्टार्ट इन दिल्ली एंड एट द सेम टाइम एंड रीच्ड मेरठ at the same time, which is 125 kilometers apart. On the way, however, the bullet train lost about 15 minutes due to a technical fault. The speed of the bullet train. स्पीड ऑफ द बुलेट ट्रेन 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन सारे हैं 5 का मल्टीपल, अच्छी बात है। ओके, सो टाइम का रेशियो मुझे निकालना था। टाइम का रेशियो कितना है? 5/4। अभी इधर एक का जो ज़्यादा लग गया इसको जाने में, इसको भी 5 लग गए, क्योंकि एक जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना है? 15 मिनट, यानी 4 का वैल्यू कितना हो जाता? 60 मिनट। ओके, सो अभी 5 मतलब कितने स्पीड में पहुंचे हैं? मतलब अभी फिर एक्चुअली अगर 60 मिनट में 4 जाता और स्पीड इसका 5 था ना, तो ओरिजिनल स्पीड तो मेरे ख्याल से 125 ही थी। एक सेकेंड, एक का वैल्यू 15 मिनट हो गया, तो 4 ओरिजिनल टाइम 60 मिनट लगता। तो आई थिंक इट इज 125 किलोमीटर पर आवर। ओके, which type of reaction is involved in rusting? I think redox reaction है। मीडियन एंड मीन, ये तो टाइम कंज्यूमिंग है काफी ज्यादा, इसको बाद में करेंगे। The surface area of a sphere is given, the radius is doubled, the surface area of the new sphere will be, so so it will be 4 times, right? So it will end with 6। एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 से एंड हो रहा है, so ये वाला आंसर। ABC started a business, they partnered for 6 months, this their respective ratios are given। Okay, so installment ratio is asked, so it doesn't matter they are investing in months or years or anything, so profit by time, profit by time, so 1/3, 1/2, so if we need to make this equal, so 2, 6 and 3, so 5-2-3, this is their investment ratio। A 9-digit number is exactly divisible by 99। Okay, x plus y is less than 9, what is the value of this? Okay, first
let's check the x plus y condition. So 13 and 2 15, 15 and 5 20, 20 and 6 26, 26 and 16 42 plus x plus y is going to be divisible by 9. So it can either be 54 or the previous one 45. So x plus y is definitely 3. This is for sure. Now the second condition, that it is divisible by 11. For 11, let me just write this number 6588. So this and this 13, 13 and 5 18, 18 and 8 is 26 plus y, and 2 8 and 8 16, x plus 16. If we take their differences, then it's going to be like then this thing has to be 27, and this needs to stay at 16, or like if it is 2, then it has to be 1, because the difference needs to be 0 actually, or 11. So y minus x is currently 10 plus y minus x is currently needs to be 11. So y minus x needs to be 1. So y is 2, x is 1. 2 times 2 minus 1, it's 2. Naphthalene on complete combustion processes produces, okay. So only है, so only तो मुझे लगता नहीं होगा. Okay, come back to it later. If 20 men and 36 boys can do a piece of work in 10 days, so 20 men times 10, so 20 m is equal to 36 b. So 20 m is already there, and 1/4 of boys are joining. So it's like 20 into 10 and 1/4 of the workforce, so 25. So it's 200, so 8 days. For a quadratic equation, a and b are the roots of this, okay, then the respective quadratic equation is the sum of the roots needs to be 2. So it is only here. पंच सिद्धांतिका अभी आइडिया नहीं है बिल्कुल. ओके, सो पूरी इक्वेशन को मुझे 4/6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सो 4x माइनस 1/6x 4/6, इसका मुझे स्क्वायर करना है, क्यूब करना है. ओके, सो क्योंकि वैल्यूज थोड़े चेंजेस है वैल्यूज में, मैं पूरे लिख के ही करता हूँ. इसका अगर होल क्यूब करूँ तो 64x क्यूब माइनस 3x और x माइनस 1/6x into 4x into 1/6x minus 1/1216x cube is 64,216. All right, now this is 4/6 and into 4/6 into 3, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो मैं ऊपर नीचे ना 6/6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. सो इट्स गोइंग टू बी
216 और 16 and 18, so 17 square minus 1, 17 square is 3, no, 17 square is 289 minus 1, so 288. So it's going to be 2 and 3, 5, 216. सिक्स नहीं जा रहा ना किसी से भी। 27, यहाँ तो 27 का तो कुछ आएगा ही नहीं, फिर 9 है, अगर 6 का क्यूब है 9 आ रहा है। कितने टाइम्स है 27 इंटू 7, 6, 8 टाइम्स, अगर इसको मैं 8 से काटूं सो 4 4 या find the compound interest on this 3 years when compound annually, तो सो नियरेस्ट इंटीजर पूछा है। सो 3 इयर्स का कितना हो जाएगा 3% करके, ओके। 13/10, 13/10, 13/10 इंटू 12500। अब इसको अप्रोक्स में कैसे करूं, और कोई ट्रिक तो नहीं लगेगा कि अप्रोक्स में ही दे दिया है इसको। सो 169 और 65, 6, 26, 32, 3, 16, सो 169 इंटू, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। उसके बाद मुझे बस इंटरेस्ट निकालना है। सो क्या ऐसे कर सकता था कि 3% का 3 बार सक्सेसिव ले लूँ, क्योंकि 3 + 3 + 3 इंटू 3 यानी कि 0.09 रह जाएगा, तो 6.09 प्लस 3 यानी कि लगभग 9.09 प्लस 18 मतलब 1.08018 यानी कि 9.027। अभी इसका मतलब ये निकालने में तो जान चला जाएगा। 5/4, ओके। सो इसको मैं 928 मान लेता हूँ, तो 4 से चला जाएगा, 4 से करूँगा तो 2 बार, 1 2, 3 बार, 2 बार। अभी 5 से करूँगा तो 10, 30 से करूँगा तो 1.5, और 5 से करूँगा तो 0.0 नहीं 0.1 मेरे ख्याल से, हाँ। तो 0.16, सो 11.6, सो ऑलमोस्ट यही मतलब क्लोजेस्ट आ रहा है। A certain amount of money deposited in bank becomes रुपीज दिस, जब ये अमाउंट हो जाता है, ठीक है।
2 years, और ये 2 साल में हो रहा है 1008, और 3.5 साल में 1164, the amount deposited in the bank and the rate of interest. Okay, so I think 13% rate is common, so the rate is going to be 13%. I am assuming it is a SI's question, so 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 in 1.5 year, so the amounts are different for every option. So let's see. So in 1.5 year, it's 1, 5, and 6. So then it's 3/2 years practically. So in half year, it's going to be 5, 2. In 1 year, it's going to be 104. In 2 years, it's going to be 208. So if we subtract 208 from here, so 800. So this option. So if melt, after melting, a thing becomes liquid. After freezing, it becomes solid. Not only ice but solid. What is the difference approx between compound interest on 6,000 for 2 years at 20%, yearly and half yearly? Okay, so yearly and half yearly. So half yearly would be 10% for 4, which is 14641, something like this. And for 20% into annum, it's going to be 144. So it's 241. 6 times doing it, so 120 plus 24 plus 6, so 144.6, so 145 approx. A man walks at an average speed of 3 km from his residence and walks 40 minutes and reaches 40 minutes early. Okay, if he walks at a speed of 2, he reaches 40 minutes late. So speed देखिए, पहले अगर 3 है देन 2 है, टाइम 2 से 3 हो जाएगा, ये में एक जो है इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 80 मिनट्स, सो 2 मतलब 160 मिनट्स. What is the distance between his residence and office? So 160 minutes means 2 and 2/3. 40 minutes is 2/3, yeah, 2 and 2/3, so it's going to be times 3, so it's 6, 8, so 8 kilometers. Under which initiative was the world's highest war memorial at Galwan developed? भारत पर्व वीरता, भारत रणभूमि दर्शन हो सकता है, शौर्य पर्व अभियान, परमवीर स्मारक. I think this can be the answer. Let's see. Vice President CP Radhakrishnan inaugurated 39th Surajkund International Craft, फरीदाबाद हरियाणा. व्हाट इज द थीम? लोकल टू ग्लोबल हो सकता है, आर्टिशियन ऑफ इंडिया, पास्ट एंड प्रेजेंट, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट. ओके, क्राफ्टिंग इंडियाज हेरिटेज, ग्लोबल हैंडीक्राफ्ट एक्सपो. ये नहीं लग रहा है, लोकल टू ग्लोबल लिंक नहीं आ रहा है क्राफ्ट का. आर्टिशियन, ग्लोबल हैंडीक्राफ्ट एक्सपो, ये वाला भी लगता है, इसको बाद में देखेंगे. एन एग्रीगेट ऑफ 36% ऑफ द टोटल मार्क्स वाज is required to pass in an examination. 84% to get a first class with distinction. A student scored 398 marks and failed by 16. So the passing marks was 2 and 14, so 414.
This was a passing marks. How many marks should the student get to secure a first class distinction? So this was 36%. For distinction, he needed 84%. So this is 6 and this is 10, 12. No, 1 for 14, 3, 7. So dividing this by 3, we will get 1. 1, 1 means 3. 2, 4 means 8 times 7. So 6 will be there. Okay. 5. So 1, 6, 2, 9. 966. National Consumer. Oh, I think it's before or just after the day of Christmas. It's either Christmas Eve or the day after. I think it's the Christmas Eve. Consumers Day. I think so. What will the which date will the Bal Sahitya Purashkar present? 12th November, I think, or 14th November actually. It's 14th November, Children's Day. Okay. Which country was awarded prestigious International Social Security Association Award for outstanding achievement in social security? I think India. Otherwise, this question won't make any sense. The mini constitution is 42nd amendment of 1976. The chairman of the steering committee. So steering committee was Rajendra Prasad. The cost of fencing a circle. The rate of pipe per meter is this. So total fencing was needed to be done for how much? So the field was it's 8 and 8, 88 meter. The circumference was. So the area is asked. Now for a circumference of 2 pi r. So 2 pi r, right? So yeah, if it's 44, then the area is 156, correct? If it's 2 times, then it is going to be 4 times. So this one. Okay. 2y. So YWTP. 25, 23 minus 4 minus 5. So 11 is going to be k. K is there. Okay. Plus 3 plus 5. 3, 5, 7, 9. 26. All right. The Harappan site showed evidence of sophisticated water management with reservoirs. So it's going to be Dholavira for me. On which day Adit was born? Okay. Adit was born on a weekend. So either Saturday or Sunday. Statement 2 saying Adit's brother was born on third day of the week. So both the sentences are not adequate enough. Next is first session. So 13 में ही हुआ था लोकसभा और राज्यसभा दोनों. Out of the four numbers listed, okay, so odd one out. Into 4 minus 1, no. Okay, so cube. Next, what describes joint sector industries? Who managed by public and private हो सकता है, managed by पंचायत, no. Joint sector, funded and foreign, okay. Solely तो नहीं होगा, so I think this one, joint sector. What is the symbolic gesture of Indian Air Force contingent fly past at Republic Day parade? So I think this is some kind of explanatory or like using short form. So advanced medium combat aircraft.
ये हो सकता है, क्योंकि इसका तो जो एक कुछ तो रिसेंटली मिला है इसके रिगार्डिंग, एएमसी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द which of the following is a key feature of disaster management? Okay, from urban disaster units in key, I think a form होता, form urban disaster units इन की स्टेट हो सकता है, सेटअप नेशनल डिजास्टर इंश्योरेंस फंड हो सकता है, शिफ्ट डिजास्टर कंट्रोल टू सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली नहीं होगा, डिसेबल ऑल स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स नहीं, तो इधर वन और टू, फॉर्म यूनिट्स इन की स्टेट सिटीज हो सकता है, सेटअप नेशनल डिजास्टर इंश्योरेंस फंड। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर हो चुका है उसके बाद मैनेज करने के लिए तो मुझे लगता है शायद यूनिट्स चाहिए हमको। इच्छामती रिवर, सेनिन ओके, ट्रांस बाउंड्री रिवर इंडिया नेपाल नहीं, ट्रांस बाउंड्री tributary of Ganga that flows entirely within Nehim, bifurcation of Mathabhanga River forming part of India. Best R&B album, no idea. The recently excavated 4,000-year-old temple on Pailaka Island in Kuwait is which ancient civilization? Kuwait, Sumerian, Mesopotamia. I think Mesopotamia. इंडिया सिविलाइज तो नहीं होगा, डिलमन का नाम नहीं सुना, सुमेरियन या फिर मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया आई थिंक, चोला कंकरर ऑफ गंगा, सो इट्स राजेंद्र वन, राजेंद्र। मुझे इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, मतलब गंगाई कोंडा चोलापुरम ये टाइटल लिया था राजेंद्र एक ने या फिर राजा राजा एक ने, आई थिंक राजेंद्र एक के साथ में जाऊंगा, लेट्स सी। एज पर इकोनॉमिक सर्वे द सेंटर्स रेवेन्यू रिसीव्ड स्ट्रेंथन फ्रॉम एन एवरेज ऑफ अबाउट, स्ट्रेंथन हुआ है ओके, सो 8.5 से ऊपर ही रहेगा कुछ, 7.8 नहीं होगा, सो आई थिंक 9.2 या फिर 8.9, स्ट्रेंथन फ्रॉम एन एवरेज 9.2, क्योंकि 9.8 थोड़ा कम हो जाएगा शायद, पता नहीं। पराक्रम दिवस कौन सा वाला था, आई थिंक 127th, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, 27 पहला वाला पिछला वाला था या फिर इसी वाला, आई थिंक 127। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बैरव बटालियन, सरप्राइज स्ट्राइक एंड काउंटर इंसर्जेंसी, सही है, या फिर साइबर, ओके, बैरव बटालियन इंडियन आर्मी, काउंटर इंसर्जेंसी सही है। व्हिच रेलवे स्टेशन रिसीव द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन प्राइज, कौन सा किसको मिला, नहीं पता इसमें से किस, कोई सा भी नहीं पता। What is the new system launched by Delhi Chief Minister at ITO for pollution and dust? AI-based air purifier, solar-powered air vacuum, smoke tower filtration, pole-mounted mist spray. I think this was done. A and B can separately do a task in 15 and 20 days separately, respectively. A starts the work and B joins him from the 5th day. All right, so 5th day से join कर रहा है, ओहो, how much will it, time will it take? So 5th day means A needs to work for 11 more days. So their efficiency was 3 and 4. If this is 3, what will be 4? This is 44 by 3.
So it's going to be 33 and 44, so 77. And here 11 times 44, 7 plus 4. So it's going to be what? 6 and 2 by 7. So it's 10 and 2 by 7. Which of the following letter will replace this and this? Okay. So let's check this one. क्योंकि V कॉमन है इस साइड पे और इस साइड पे K कॉमन है, सो ये थोड़ा सा ये और ये VYD होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. नेक्स्ट वाला देखते हैं. सो V से O -7, Y से R -7, D से W, D मतलब 4 मतलब 30, -7 23 से ये -7 करके चल रहा है इस साइड. R 18 -7, K U 21 -7 is going to be N. Okay. Z is at 26 -7 is S. So okay. Next, in a trunk there are 3 types of ice cream of flavor vanilla, chocolate, this and this. Okay. The probability of selecting one vanilla ice cream is half, and the probability of selecting one blueberry ice cream is 2/7. The number of chocolate ice cream is 6. Number of ice creams in the trunk. So if the vanilla probability is half, then the total number has to be even. So I'm eliminating 25. All right. Now it is also a multiple of 7, as I can see. So the probability of the total number of ice creams is tilting towards 28, but let's see. Suppose there are 28 ice creams, and out of those 6 are what? Chocolate. So 28, so there are 6 chocolate. 6. So there are 22 remaining, and I don't need to bifurcate it. Okay. So let's see. Let's say 14 are of vanilla. So remaining 8 are going to be this. So 8 by 28. So it's 2 by 7 blueberry. All right. So it's 28. On which island is India's only active volcano? So it's barren. Barren is active, and Narkondam is dormant. Which of the following is a non-metal? I have no idea, but I think aluminium is a metal. Calcium, sulfur, magnesium. Magnesium also sounds like a yum. All of these are yum, so I will go with sulfur. An uprooted plant was left in the sun. All right. After a few hours, the plant looked withered and weak. What could be the most likely reason? Water conduction through xylem was blocked. Started to nahi hoga. Food transaction began. I think water transaction blocked. That's why it was wilted. All right. Mean of 100 observation is 45. It was later found that 2 observations were incorrectly recorded as this and this. Okay. The correct mean is asked. Correct mean can never be 45. So it has to be within this. All right. So 2 observations were incorrectly recorded as this. So okay. So it's going to be less than 45. Now adding this 2, we will get 104, and adding this 2, we will get 50. So 54. Oh, okay. 54 less. Yeah, that's what I'm thinking. I was thinking this was going to be the answer, but it is 54 less. So 44.46. In a code language, he is coded as this. She is coded as this. Okay.
H8E5, so plus into 2. She, S means 19, so 19, so 38, 38 and 26 is 64. All right, then they, T, H, E and Y, so 30 and 28 is 58 into 2 is 116. We could have narrowed it down because we are multiplying 2, so this and this could never be the answer, so still we would have to like check between these two. So all right, sweet fruits is this. Okay, what is the code for citrus? So orange is citrus is here, so इसका कोड मुझे के नहीं चाहिए, फिर ले ओके, ऑरेंज पे है, सो ले हो जाएगा साइट्रस का कोड, और सिट्रस. A medical store owner purchases medicine worth 18,000 from a company. He sold 2/5 at 35%. एक्चुअली 5 ही मान लेता हूँ ना, तो 2 and 3, इसमें उसको 35% लॉस हुआ है, अच्छी बात है. सो कोई लॉस गेन नहीं चाहिए, तो टोटल उसको 70 करना है, तो इसको मैं अगर 70 से भाग दे दूँ तो 3 and 1/3, नो, व्हाट द हेक, 2 103, so 23 and 1/3. A man standing at a lawn facing north and west direction. The man turns 45-degree clockwise and then 135-degree anti-clock. So 90 anti-clock, 135 anti-clock. Which direction is he facing? So this is south and west. Southwest. All right. Based on 2011 census, identify the Indian state that recorded highest percentage of Christian population. Okay. So if I have to guess, I cannot guess. So let's skip it. Next, how many such even digits are there which are immediately followed? ऐसे क्वेश्चंस में मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि how many even digit. So even digit are there which are immediately preceded by a perfect square and immediately followed by a odd. So even odd मुझे पहले ढूंढना है ये पेयर, उसके पहले मैं देख लूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. सो इवन ऑड का पेयर, इवन ऑड परफेक्ट स्क्वायर एक मिल गया. इवन, ओके, इवन ऑड, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, फिर से इवन ऑड नहीं है, इवन ऑड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इवन ऑड परफेक्ट स्क्वायर है, दो मिल गए. फिर फिर इवन फिर से इवन ऑड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इवन परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन ऑड नहीं है. उसके बाद तो फिर दो मिले. Each of the digits in the number is arranged in ascending order from left to right. The position of denominator will remain unchanged. Okay, so 5 2 3 8 6 4 1, ascending order from left to right. So 1 2 3 4 5 6 8, नहीं, एक मिला, दो मिला, so 2 will remain unchanged. भाखरा नंगल सतलज रिवर पर है. Where is the National Research of Agroforestry? जहाँ पर फॉरेस्ट होगा तो शिलोंग हो सकता है. रांची में कहा फॉरेस्ट है शायद, लेकिन झांसी, आई थिंक शिलोंग. Agroforestry, I will go with Shillong. Which of the following functions is not typically performed by high courts? Okay, superintending lower courts within state नहीं करता है. Conducting trials for criminal cases as a record of first instance हो सकता है. Issuing writs for enforcing fundamental rights ये भी करता है. Reviewing decisions of subordinate courts ये भी करता है. Okay, not typically performed. This is
ऑल्सो डन बाई सुप्रीम कोर्ट, बट ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट नहीं करेगा, हाई कोर्ट भी कर सकता है। कंडक्टिंग ट्रायल्स ऑफ क्रिमिनल केसेस एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, इसका मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहला फर्स्ट इंस्टेंस रिकॉर्ड होता है मेरे ख्याल से। कंडक्टिंग ट्रायल्स ऑफ क्रिमिनल केसेस एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि रिट्स इशू तो करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए। सबऑर्डिनेट supernaturally or fulfilled state. I think this is going to be the answer, but let's see. Okay, Mother Mary is Arundhati Roy. CG. So this is going to be K. So 7. Okay, so 21. Next, if the net factor income earned from the rest of the world is 0, so NFI is 0. Okay. Which of the following relationship must necessarily be true of the national income? The gross national product equal to net national product. No, this is about depreciation. So gross domestic is equal to gross national. But here we won't be counting the, you know, the companies which are of abroad. Gross domestic product is larger than national product. Gross domestic product equal to national income. Factor cost. National income is GNP at factor cost. But domestic. Practically, I think this one, but ऐसा कहीं पे लिखा नहीं गया ना कि मतलब बाहर वाले कंपनीज का क्या कर रहे हैं हम। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो तब तो मैं दे देता, लेकिन इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर ग्रेटर देन, क्या डिमांड क्या है इसका। ओके, नेट फैक्टर बोल दिया है ना, तो फिर तो इक्वल रहेगा। ओके, oh my god, this is something new, I think. By member research from the cricketers, this, okay, and boxers, this. At least 3 cricketers must be in the group. However, Arun is choosing. Who else would have definitely been in the group? So Arun है, अरुण है तो प्रिया नहीं रहेगा। नो प्रिया, प्रिया नहीं रहेगा। ओके, मोहसिन refuses to work with नेहा, so मोहसिन और नेहा एक साथ नहीं। नीतीश मोहसिन के साथ नहीं रहेगा, तो मोहसिन के साथ नीतीश भी नहीं रहेगा। अच्छी बात है। अरुण के साथ प्रिया नहीं रहेगा। नेहा नेहा कह रहा है कि मैं सिमरन के साथ नहीं रहूंगा। ओके, सो एटलीस्ट 3 क्रिकेटर्स मस्ट बी इन द ग्रुप। सो उसमें से अरुण तो ऑलरेडी है, बाकी अरुण है। प्रिया अगर नहीं है, कोई बात नहीं, प्रिया नहीं है। नेहा, इसको मैं क्रॉस करता हूँ अभी। सिमरन, ओके। सो अभी आदित्य और नीतीश, पता नहीं क्या है।
इनमें से किसी एक का रहना जरूरी है। अगर वो आदित्य को चुन ले, अगर आदित्य को चुन लेता है वो, तो इधर से कोई एक अगर आ जाएगा तो ही तो बात बन जाएगा। इफ अरुण चूजेस हु एल्स वुड हैव टू बी डेफिनेटली, डेफिनेटली कैसे हो रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि अरुण आ जाए, एटलीस्ट ओके 5 मेंबर्स का ग्रुप है, ओके 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 ओके। फिर आदित्य किसी के साथ भी मतलब ऐसे झंझट में नहीं है, तो शायद आदित्य ही है, लेकिन बाद में एक बार चेक कर लेंगे। सो सेकंड का प्लान था हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, 3 स्टील प्लांट्स बने थे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ओके, सबमर्जिंग है। अभी भी 45 क्वेश्चन बाकी है और टाइम बाकी है 30 मिनट। सो आई थिंक हो जाएगा, तो उतना टाइम का तो कोई मसला नहीं रहेगा शायद। जिस चीज़ का मसला रहेगा वो है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करें। अगर इसको अगर मैं, चलो बाद में देखेंगे इसको भी। ओके सो 8 से, सो 1 1 1 माइनस हो रहा है, इधर से भी 1 1 1 हो रहा है। सो 4 8 6, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन, स्टील पाइप्स, नहीं पता। सो बहादुर शाह जफर, सो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद हुआ था, लेकिन अब ऐसा डेट पूछ रहा है तो अप्रैल में तो नहीं होगा, इतना जल्दी तो नहीं था। अब इतना देर भी नहीं होगा, फिर 1.5 साल बाद करेंगे ऐसा भी नहीं होगा शायद। 57 में ही भेज दिया था। Which law allowed intercaste and interreligious marriage during British? Okay, सारदा एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं होगा, सारदा या फिर एक्ट ऑफ 1872, विडो मैरिज, नो आई थिंक सारदा। होम रूल लीग, ओके सब, गंगाधर तिलक जी का जो था उसका था पुणे में, उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी नहीं आता था। तो 8 persons are living in different floors, okay ground floor 1, so 8 7 6 5 4 3 2 1। okay, now it is saying that I think इसको independently करना था ना। only 2 people live between C and D, C 1 2 E, only 2 people live between E and D, 1 2 D, F lives on the topmost floor, G lives immediately above B, G lives immediately above B, A lives on one of the floors below E, A lives on one of the floors below E। okay, so 1 2 3 4, ओके पूरा स्लॉट इन हो चुका इधर, बट अबव D and H, above D, okay so H, A, so C 1 1 E, A, H,
D G B. Okay, D lives on the ground floor. How many floors are there between? एक क्लू पहले पढ़ना था ना. ओके, सो सी और एच के बीच में, सो सी और एच के बीच में 1 2 3 4. General Dyer stated objective behind the Jallianwala massacre, which happened in Ato, to produce a moral effect and instill terror among. Okay, हो सकता है, to prevent rebellions, no, to retaliate against strike and protest, or no. आई थिंक यही वाला बोला था, मोरल इफेक्ट ऐसा कुछ, क्योंकि कोटेशन में भी दिया हुआ है तो चांसेस तो ज़्यादा है इसके. On one, one of the processes, from the ready state will be chosen by the OS. क्या? One of the processes from the ready state will be chosen by the OS depending upon the schedule algorithm placed in dash state for execution. Running state for execution, suspense state. ओके, इनके बाद कोई मतलब पता नहीं, मुझे रनिंग लग रहा है, मतलब ग्रामेटिकली भी और वैसे भी रनिंग स्टेट लग रहा है. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, आई थिंक यही वाला है, एनियाक. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? ओके ओके, एप्पल आईओएस. In cloud computing, what does LAS stand for? Okay, IaaS, Internet as a Service, Infrastructure as a Service, Internet as a Server, Infrastructure as a Server. I think Internet as a Service और Infrastructure as a Server. इंटरनेट एज ए सर्विस, इसका तो कोई मतलब नहीं बनना. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्वर यही हो सकता है सर, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो मतलब ज़्यादा आइडिया है नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग MS PowerPoint view display presentation as title and main text only? Title and main text. Thumbnail view. Which of the following is not an operating system for mobile phones? So Android है, iOS है, WebOS, Unix. WebOS ये क्या LG का है क्या? WebOS. Unix का तो मुझे पता नहीं है. WebOS. Let's see. In a fixed code language, clear is written as this. Okay, so clear is written as this. How will brain be coded? Okay, 3 12 5 1 8 is 19, J is 10. Okay, +7 इससे -4. Okay, y is 25 and h. Okay, so +7 -4. Okay, so a से -4 मतलब 27 -4 23 w. सो w ये दोनों ऑप्शन में है. ओके, सो ये वाला आखिरी वाला -7, n -7 +7. ओके, सो 14 +7 21, सो u. ओके, o n j r q f. o से r. ओके, +3, w से +3, सो पहला वाला +3 चल रहा है. नेक्स्ट n से q +3, o से r +3, j से f -4, e से l
-4, हाँ सही है। सो P से L सही है, M से H नहीं होगा, M तो 13 पे है ना। नहीं होगा। N से K हो सकता है, O से K, N से अगर K रहा तो O से K नहीं होगा, तो अभी इन दोनों में से। D से G +3 सही है, N से Q, N14 ओके दोनों ही सही है। सो L से N, L12, N14 नहीं होगा, सो यही वाला हो जाएगा। फिर G से J, 7 से 10, हाँ सही है। If all the vowels are dropped from the series, which symbol number will be fifth from the right end of the 13th from the right end? So 8th from the right end कौन सा होगा अगर सारे vowels को drop कर दें? So 1 2 3 4 5 6 7 8, so n आ रहा है मेरे हिसाब से। Next is ये क्या लिखा है भाई? Chillergy +4, M +4 Q, okay, L -4 O 50 -4, so K, so QK, ओके। लास्ट दोनों भी एक और चेक कर लेता हूँ। ई से आई, ई से आई +4 N R, हाँ सही है। तो नेक्स्ट वाला ×3 नो, ×6 नहीं आ रहा है, प्लस करके ×2, ओके, प्लस करके ×2, प्लस करके ×2, सो ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल। Find the next number, ×2 + 1 ×2 + 1 ×2 + 1 × 2, so 4 + 1 5 आएगा आखिर में। तो ये पूरा कर लेता हूँ। सो P2 यानी कि P हस्बैंड है Q की, Q6, so Q is sister of R, Q is sister of R, sister of R, sister of R, R is sister of S, S is mother. How is P related to S's mother? P is son-in-law. Q star, so Q is mother of P. P minus means P is sister of R, R is sister of S. How is P related to S? So P is sister. Hello, okay. P is sister of S. All songs are poems, all poems are rhythms, no rhythm is photograph, no song is paragraph, no song is paragraph, वाला वाला सही है, no poem is paragraph सही है, so both plus minus into, okay, divide, -91, so ये 17 आ जाएगा, और ये जाएगा कितना बार, 8 टाइम्स या 8 3,
So 3 plus 17, 20. Which two numbers should be interchanged to make the equation correct? अगर 28 को चेंज कर दूंगा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। 5 और 3, 4 और 9। ओके, 4 और 9 को एक बार चेक करके देखता हूँ। सो 28 माइनस 9 इंटू 5 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6। ओके, सो ये 9, यहाँ पर माइनस का 45, बहुत ज़्यादा हो रहा है माइनस का, नहीं होगा। सेकेंड पे यहाँ पे 5 और 3, सो 28 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 10। ये भी नहीं हो रहा है। इसको देखता हूँ, 2 और 9, सो 28 माइनस 20 प्लस 2 हो रहा है तो 18 प्लस 9 इंटू 3 27, सो 8 सो 26 और 27, हाँ ये हो रहा है। सो जी जे प्लस 3 माइनस 4 प्लस 2, क्यू यू प्लस 4, जेड सी प्लस 3, ई एच प्लस 3। यहाँ पर ये बस प्लस 4 हो रहा है, सो दिस वन। नेक्स्ट इज 4 लेटर क्लस्टर वर्ड। अभी इधर इन दोनों में ऐसा है कि पहले से आखिरी वाले में थोड़ा कॉमन दिख रहा है कि ए सी, यहाँ पर बी डी बी सी हो गया है। मेरे ख्याल से ये वाला गलत है, उनको चेक कर लेता हूँ। ए से सी हो रहा है, +2, एन से पी +2, जी से आई +2, ई से जी, हाँ सही चल रहा है। तो बी से डी हो रहा है, ए से सी हो रहा है, आखिर में बी से भी सी हो रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। हाउ मेनी revolutions per minute of wheel of car will make to maintain a speed of, okay, व्हील ऑफ द, और रेडियस कितना है 14, सही है ना। तो टोटल सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा 88, 88 सेमी, ये है सरकमफेरेंस। अभी 132 किलोमीटर पर आवर अगर मुझे जाना है तो मतलब ये 0.88 मीटर है। ओके, इसको मीटर पर सेकंड कर सकता हूँ ना, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कितना आएगा, इनटू 5/18, 7, 9, कटेगा नहीं तो। आई थिंक मैं मान लेता हूँ कि ये है एक बार में जाएगा, मैं मान लेता हूँ कि एक बार जाएगा टोटल, ताकि 132 हो जाए एक घंटे में। तो ये 0088 ये टोटल आएगा। इसको भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, ताकि पर मिनट आ जाए। तो एक 0 से कटेगा, इससे ये कटेगा, तो 11 से पहले कर ले तो 8 बार, 11 से एक, 2 बार 20, 20/8, 25 ऐसा आ रहा है। आई थिंक यही वाला सही है।
2500. So DEM is quoted as something. ATP का कोड चाहिए मुझे. So T का कोड मुझे MOST. ओके. सो M इधर है और इधर है. सो M का कोड 9 नहीं है, तो फिर E का कोड मुझे चाहिए भी नहीं. ओके. AP. सो 8369 में से दोनों तो रहेगा. 851 नहीं हो जाएगा. 6658 हो सकता है. 651 दो चेंज नहीं होगा. 869 तीन कैसे आ जाएगा? सो दिस वन. Determine the mean deviation about the mean. इसका मीन डेविएशन पूछा है. पता नहीं भाई कैसे करूंगा उसको. टाइम रहेगा भी तो भी नहीं करूंगा. इतना बड़ा क्वेश्चन. 8 friends are sitting 2 rows facing each other. Okay. Q and R are sitting in front of each other. R is an immediate neighbor of S and T. W is sitting immediate left of T. W are diagonally opposite. Okay. V and Q are not sitting next to each other. V and Q. Okay. W, T, R, S और किसको बोला था? Diagonally opposite W and U. All right. Q and R are not sitting in front of each other. So Q इधर नहीं हो सकता. Q को अगर इधर दे दूं नहीं हो पाएगा. तो Q इधर ही होगा, V इधर ही होगा. तो T के सामने कौन है जिनका मेंशन नहीं हुआ है अभी तक? कौन है ऐसा? P. So okay, so 3 different kind of milks are there. So first quality is this, second is this, third is this. Find the least possible number of bottles of equal size. All right. So इसका मुझे पहले तो निकालना है जो वो है इसका गैप कितने का है. इसका गैप है 19 का. अभी 19 का तो कोई मुझे नहीं मिलेगा ऐसा. तो 4 7 5 2 times 38 देन 9 5 25 इधर. फिर ये है 2 times ज़्यादा 38 ज़्यादा सही है. सो 25 प्लस 27 प्लस 28. ओके. सो ये 2 5 आखिर में नहीं 15 और 5 0. सो 0 आएगा आखिर में. 80. HCM and LCM of two rational numbers are equal, then the numbers must be I think equal. कोप्राइम अगर होगा तो HCF तो 1 आएगा. अगर दोनों नंबर प्राइम है फिर भी आपका HCF 1 ही आएगा. सो इक्वल. ट्रेवलर इज टू जर्नी. ट्रेवलर जर्नी करता है तो सेलर वॉयज करेगा. फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर. ओके. कनकेव मिरर. ओके. इमेज फॉर्मेशन के लिए एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस from a highly diminished image. The size of the image is enlarged when the object is placed at infinity. The nature of the image is real and erect. Real तो नहीं होता है. At the center of the curvature, the size of the image is same as the size of the object. ये हो सकता है कि 2f पर शायद सेम रहता है दोनों का. If x is the lower limit of the median class and y is the upper limit of the model class,
मॉडल क्लास क्या है ये? मीडियन क्लास तो मुझे पता है, लेकिन मॉडल क्लास क्या है मतलब? मोड, मोड का जो मॉडल क्लास बोलता है शायद, मुझे नहीं पता इसका बारे में। तो मीडियन क्लास कौन सा है? सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, y is the, so y is going to be 20 and x is going to be 21 and 5 27, 26, 26 and 7 33, 33 plus 16 49 plus 1 so 25, 25 यही पर आ जाएगा। so x भी तो 20 है, so 100। okay, which formula gives electrical power? E equal to v square by r, मेरे ख्याल से equal to v square by r, v square equal to i, p equal to ir, p equal to ir, पावर v by r square, square by r। The speed of a boat in still water is 17 and stream is 11. Find the difference between the upstream speed and the downstream speed. Upstream speed हो जाएगी 28, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 6, so 22। okay, so 2x square plus 5x plus 1 equal to 0, then x square plus 1 by 2x माइनस का है ना इधर। ओके, पहले प्लस का निकाल लेता हूँ। -5x था इधर, -5/2, इधर। ओके, सो इधर एक 2 ऑलरेडी है, इधर और हाफ करूंगा तो मेरे ख्याल से बाई 4 आएगा नीचे। सो भोरामदेव कॉरिडोर छत्तीसगढ़ being developed under which central government scheme? प्रसाद या फिर हृदय, इनमें से कोई एक होगा। Okay, 6 are living in 6 different floors of the same building. 6 5, I think I should complete it first. He lives in an odd number floor but not on floor number 5. Only one person lives between E and C. D lives immediately above F. D lives immediately above F. Okay, B lives on a floor. B lives. A does not live on the topmost floor. Topmost floor D. Different days of the same week starting from Monday and ending on Saturday. There is no lecture on Sunday. Okay, B being the senior most person is allocated
on Saturday. D being the most second senior most person is allocated on Friday. 3% delivered their lectures before E. For day immediately following the lecture. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. The senior most person is allocated on Saturday. So B. D being the second senior most person allocated on Friday. D. C on Monday. Exactly 3% deliver their lectures before E. If F's lecture is scheduled for the day immediately following the lecture of the most senior person, F, which day F's lecture? Wednesday. तीन और एक देख के पता चल रहा है. Find the angle in radian through which a pendulum swings. If its length is atto and the tip describes an arc 10 semi. So total कितना सेमी का होता? 75 है ना. 75 into 2 pi r. So 2. Okay. 2 pi radian. नहीं निकालना पड़ेगा इसका तो. 10/2 into r into 7. 10. 7 boys are sitting in a circular table facing center. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pawan is second to the left of Aman. Varun is third to the right of Pawan. Okay, so Pawan is second to the left. 1, Pawan. Varun is third to the right of Pawan. 1, 2. Varun. Nitin is not an immediate neighbor of Pawan and Varun. So Nitin. Lalit is third to the right of Tarun. Lalit sitting second to the left of Pawan. Pawan is second to the left. Nitin. 6 colleagues are sitting in a circular table facing away from the center. 6 colleagues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peter is sitting immediate right of Queen. So Queen की immediate right to Peter है. Tina is not sitting next to Peter. Okay. Sam, who is sitting immediate right of Queen, immediate left of Queen, is also sitting immediate right of this something. यहाँ पर टीना आ जाएगा, who is sitting immediate right of टीना. So अलीस का जो okay. एक क्वेश्चन छोड़ा था. Okay, right to work. I think at 39, 41.
36 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। LDC goes to, नहीं आ रहा समझ। ओहो, इसको शायद 16 और 14 देता मैं, अगर टाइम रहता थोड़ा तो। ओके, लास्ट डे जो एग्जाम गया था, इसको कैसे पता चला मैं प्रोग्रेस से फिल किया हूँ? अरे बाप रे बाप। ये वाले जो है ये तो मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन ये वाले असल में एग्जाम दे रहे हैं ऐसे ही। तो मैथ में गलत हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, पॉलिटी में एक गलत हुआ है, कंप्यूटर का थोड़ा देखना पड़ेगा। एक बार सोल्यूशन देख लो तो ऊपर से। इसको मैं अगर देता ही तो 42 देता, 41। ओके, BPSP 41। ओके, हाँ ये मुझे मिस हो गया मेरे से। इसका मुझे कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। नेक्स्ट, इसका अगर मैं सोच रहा था कि 16 दोनों में कॉमन है और 14 कॉमन है, सो अच्छा हुआ नहीं दिया। 15 भी कॉमन था ना। ओके, सो नेक्स्ट, ओनली नहीं था मेरे ख्याल से, ये देता मैं अगर देने को होता तो। नेक्स्ट, पंचा विश्वामित्र, इसको सोच रहा था मैं, अच्छा हुआ नहीं दिया। फिर ये नहीं था। अच्छा, ओके, 42। ओके, पर ये नहीं होगा तो फिर ये वाला होगा, 44। कोई आइडिया नहीं है इसका। RNB, ओके, डिलमन, अच्छा, 48। पराक्रम 129 हो गया है। ओके ओके, 48, 50th कट, 63। ओके, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, नागालैंड 7। शिलोंग नहीं था आंसर, तो झांसी शायद 75। इसका लॉजिक देख लेता हूँ। इसका मतलब कोई लॉजिक है ही नहीं, मतलब अगर ऐसे करने लग जाए तब तो हो गया। टाटा स्टील हाइड्रोजन प्लांट, ओके। ये मैंने ये वाला दिया था, सॉरी ये वाला दिया था, फिर शायद ये वाला होगा। ये शारदा एक्ट दिया था, फिर शायद एक्ट ऑफ 1780, 1872, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1872। शारदा एक्ट था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ओके, 79। तो मैक ओएस है।
Chromes. Okay. Next, 86th, infrastructure service. Okay. Next one is displaying outline view. Okay. ONJ, ये गलत किया था. Okay. ONJ 15 से 18 plus 3 plus 3. So plus 3 plus 3 minus 4 था. J से F था. P से L ओके. P से L ओके. M से H नॉट ओके. N से K ओके. O से K ओके. Then L से N plus 3. 12 and 14 no not okay. G से J ओके. D से G ओके. K 11 and ओके. D ओके. D से G हो रहा है. K से N हो रहा है. L ओके. ये बात कंडीशन में नहीं है. तो N से Q. N इज एट 14. Q 17 हो रहा है. G से J प्लस 3. N से K. K तो 11 पे है ना. शिट. ओके. नेक्स्ट, ये वाला तो पता नहीं कौन से स्टूडेंट्स ने किया है, काफी लेंथी था. 04 114 रीड है. तो स्वदेश दर्शन के अंदर कॉरिडोर बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में. नेक्स्ट, ये वाला गलत क्या है. ओके. 14. ओके. सो ये वाला क्या था भाई. allocated different days to remains instead Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. No lecture on Sunday. B being the senior most allocated Saturday. D being the second senior Friday. C just allocated on Monday. Exactly 3 persons delivered the lecture before E. If F lecture is scheduled for the day immediately following the lecture of the most junior person. Okay, C most junior person था ना. ओके. और ये वाला जो था, find the angle in radian through which a pendulum swings. टोटल है 2 पाई रेडियन. इसका मुझे पूछा था कितना होगा. अगर आर्क लेंथ 10 से ही बना रहा है, 10 से ही बना रहा है, कितने में से. 360 में से. यानी नहीं नहीं ऐसे नहीं, पूरी डिग्री में चाहिए. ओके. सो 10 से ही बना रहा है. टोटल कितना होता. टोटल इसका होता, अभी मैं फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, तो टोटल होता 2 पाई आर इंटू 7 करते हैं. ये 2 पाई so this is going to be बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. एल इक्वल टू आर इंटू ए. एल इक्वल टू 10 से भी आर ए. ओके. तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, एल इक्वल टू आर इंटू ए. ये एंगल इन रेडियन होता है. सो इसको बस लेंथ से अगर भाग कर देता आर को, 10/75.
ऑल राइट, तो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस डुएबल थे और, लेकिन अभी ये जो कट ऑफ दिखा रहा है ये तो आउट ऑफ 100 है, तो डेफिनेटली कट ऑफ तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन हाँ बाकी जो डुएबल क्वेश्चंस थे अगर उनको भी अटेम्प्ट कर सकता था सही से, अगर 100 के ऊपर जा पाता तो एक अच्छा अटेम्प्ट मारता। लेकिन बाकी देखते हैं, अभी भी 9 दिन 8 9 दिन है अभी भी समय, तो कितना कुछ हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।